हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लॉ विजडम। तो आज हम बात करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस की। इसमें हम देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ AOP एंड फर्म, एंड लास्टली रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। The incidence of tax on any assessee depends upon his residential status under the act. मतलब उस पर्सन पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा वो उस पर्सन के रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। For the purpose of income tax, taxpayers are classified into 3 categories on the basis of their residential status. Taxpayers को इन 3 categories में डिवाइड किया है। नंबर 1 रेसिडेंट एंड ordinarily resident, number 2 resident and not ordinarily resident, and number 3 non-resident. So सबसे पहले आता है residential status of individual under section 6 clause 1. The residential status of individual is determined on the basis of the period of his stay in India. There are basically 2 types of conditions which individual need to satisfy. Number 1 basic conditions and number 2 additional conditions. The basic conditions are to determine whether the person is resident or non-resident, and the additional conditions are to determine whether the person is ordinarily resident or not ordinarily resident. बेसिक कंडीशन में सबसे पहले आता है इंडिविजुअल मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर में इंडिविजुअल 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा इंडिया में होना चाहिए। नंबर 2 ही मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब कि प्रीवियस ईयर में ही मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर एंड प्रीवियस ईयर छोड़ के उससे पहले के 4 सालों में वो एटलीस्ट 365 डेज और मोर ही मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया। बट हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस टू द सेकेंड कंडीशन अबोव. First one, Indian citizen who leaves India during previous year for the purpose of employment outside India or as a member of crew of an Indian ship. And second one, Indian citizen being outside India comes or visit to India during previous year. तो इन 2 केसेस में second condition applicable नहीं होगी. Now, additional conditions. In that first one, he is a resident in at least 2 out of 10 previous year preceding relevant previous year. Means previous year छोड़ के उससे पहले के 10 सालों में से कम 2 साल वो इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए. Second, his stay in India in last 7 years preceding the relevant previous year is 730 days or more. मतलब प्रीवियस ईयर छोड़ के पिछले 7 सालों में से वो कम 730 डेज इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए. तो ये कंडीशंस अप्लाई करके हम इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल सकते हैं. तो उसमें सबसे पहले आता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. द इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इफ एंड ओनली इफ he satisfies at least one of the basic condition and both of the additional condition. Resident but not ordinarily resident. The individual is said to be resident but not ordinarily resident if he satisfies at least one of the basic condition and one or none of the additional condition. Now the non-resident. The individual is said to be non-resident if he does not satisfies either of the basic condition. और अगर बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाइज नहीं करता तो एडिशनल कंडीशन का तो सवाल ही नहीं उठता. तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो मैंने इस चार्ट में पुट किया है. दिस चार्ट इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस गाइज, डोंट ड्रॉ दिस इन एग्जाम. सो लेट्स जस्ट ओवरलुक दिस चार्ट. The individual is said to be resident and ordinarily resident if he satisfies at least one of the basic condition and both of the additional conditions. The individual is said to be resident but not ordinarily resident if he satisfies at least one of the basic condition and one or none of the additional condition. And lastly, the individual is said to be non-resident if he does not satisfy either of the basic condition. Now let's move on to the residential status of HUF. In that first one, resident, the HUF would be resident in India if the control and management of its affairs are situated wholly or partly in India.
The HUF is said to be non-resident if the control and management of its affairs are situated wholly outside India. Resident and ordinarily resident is determined by the status of Karta. If Karta is resident and ordinarily resident, then HUF would be resident and ordinarily resident. Similarly, if the Karta is resident but not ordinarily resident, then the HUF would be resident but not ordinarily resident. Residential status of HUF. HUF would be resident if control and management situated wholly or partly in India. HUF would be non-resident if control and management situated wholly outside India. And HUF would be resident and ordinarily resident and resident but not ordinarily resident. ये डिटरमाइन करेगा कर्ता का स्टेटस. कर्ता मीन्स हेड ऑफ द फैमिली, मतलब वो एक इंडिविजुअल हुआ, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम जो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं वैसे सेम निकालना है. नाउ थर्ड वन इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म और AOP. रेसिडेंट कब होगी फर्म? अ फर्म और AOP would be resident in India if control and management of its affairs is situated wholly or partly in India. Similarly, non-resident कब होगी? A firm or AOP would be non-resident if control and management of its affairs situated wholly outside India. तो ये अब चार्ट में देख लेते हैं. रेसिडेंट कब होगी? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया. नॉन रेसिडेंट कब होगी? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया. Now, residential status of companies. Resident, a company is said to be resident in previous year if it is an Indian company or its place of effective management, that is POEM, in that year is in India. Non-resident, a company is said to be non-resident if it is not an Indian company or its place of effective management, that is POEM, is also not in India. प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट दैट इज पोएम मीन्स कंपनी कहाँ से ऑपरेट हो रही, वो प्लेस, उस प्लेस के हिसाब से वो कंपनी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है वो डिसाइड होगा. अगर वो प्लेस इंडिया में है तो कंपनी रेसिडेंट हुई, अगर वो प्लेस आउटसाइड इंडिया है तो कंपनी नॉन रेसिडेंट हुई. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज. रेसिडेंट कब होगी? जब वो इंडियन कंपनी होगी एंड उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट दैट इज़ पोएम इंडिया में होगा. नॉन रेसिडेंट कब होगी? जब वो नॉन इंडियन कंपनी होगी एंड उसका पोएम इंडिया में नहीं होगा. So this is it for the today's video guys. Hope you like this video and don't forget to like, share, subscribe and comment.